Welcome students to the course on the Principal Upanishads. Today we will start lesson 6, which will cover the chapter 1 section 2 or Valli 2. In lesson 4 and 5 we have discussed chapter 1 Valli 1. Okay, Valli or Valli, you can say Valli, or we also pronounce as Valli. So I am using B for that. Mantra 1. प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली. मंत्र 1. अन्य श्रेयो न्यद्वितेव प्रेयस्ते रूभे नानार्थे पुरुषं सिनीत तयो श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयते थद्य उप्रेय वृणीते. Yama is answering to the question, the third question of Nachiketas. गोटे कर्म मंगलदायक अटे, गोटे कर्म सुखकर अटे. ए उभय भिन्न भिन्न प्रकार जीव को बंधन रे पकांती. सेमानक मध्यरु जे श्रेय अर्थात मंगलमय पथ अनुसरण करे से लक्ष्य पथ सिद्धि प्राप्त हुए. जो माने प्रेय बा सुखलाभर पथ अनुसरण करंती से माने मूल लक्ष्य पथरु विच्युत होती. Mantra 2. The explanation for Mantra 1. The two ways. Yama said, different are the good and different indeed is the pleasant. These two with different purposes bind a man. Of these two, it is well for him who takes hold of the good, but he who chooses the pleasant falls for his aim. Mantra 2. श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत स्तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते. श्रेय और प्रेय उभय मनुष्य को पाखक आसती, उभय मनुष्य को आकर्षण करती. जो माने ज्ञानी से माने श्रेय को ग्रहण करती, जो माने अज्ञानी से माने प्रेय को ग्रहण करती. से माने शरीर सुख पाई भोग्य वस्तु संग्रह करती और साइती रखती. 2. Both good and pleasant approach a man. The wise man, pondering over them, discriminates. The wise chooses the good in preference to the pleasant. The simple-minded, for the sake of worldly well-being, prefers the pleasant. We cannot strive for the vision of the God if we do not shun the stains of the sin. Illumination and union follow purgation of the process of self-discipline. Mantra 3. सत्वं प्रियान् प्रिय रूपांश्च कामान् अभिध्यायन नचिकेतोऽस्त्य श्राखिः नैतां शृङ्कां वत्तमयी मवाप्ते जस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या. जमराज कहते हे नचिकेता, ए संसार रे मनुष्य माने तुरंत सुखप्रद द्रव्य प्रति आकृष्ट होई पड़ती. तुम्हें सुखर बंधन को परित्याग कर विवेचना करी सत्य पथ को आश्रय करछ. But thou, Nachiketas, hast rejected after examining the desires that are pleasant and seems to be pleasing. Thou hast not taken to the way of wealth where many mortals sink to ruin. Mantra 4. दुरमेते विपरीते विसूचि अविद्या जा च विद्येति ज्ञाता विद्याभिस्थितं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो ललूपन्त. विद्या और अविद्या विपरीत एमानंकर गति भी भिन्न भिन्न. विद्या और अविद्या को ठीक भाव में चिन्हि पारे तुम्हें ज्ञान को आश्रय करिछ. मु मने करुछि तुम्हें वासना द्वारा लुब्ध होई नाह. Widely apart and leading to divergent ends are these: ignorance and what is known as wisdom.
I know thee, Nachiketas, to be eager for wisdom, for even many desires did not distract thee. Mantra 5, Mantra 5. अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः परिजन्ति मूढ़ा अंधन्नेव नियमाना यथान्धाः। ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବିରାଟ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ି ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇବା ପରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି। Abiding in the midst of ignorance, wise in their own esteem, thinking themselves to be learned, fools treading a tortuous path, go about like blind men led by one who himself is blind. मंत्र 6, मंत्र 6. न संपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति पर इतिमानी पुनः पुनर्वणमापव्यते मे। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରର ଧନ ଆଦି ମୋହରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଲୋକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତ ହିଁ ସତ୍ୟ ଓ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହୁଏ। What lies beyond science, not to the simple minded, careless, who is deluded by the glamour of wealth, thinking this world exists, there is no other, he falls again and again into my power. मंत्र 7, मंत्र 7. श्रवणायापि बहुभिर्जो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो जं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य लब्धा सुश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुष्ठः। एठारे आत्मज्ञान विषय किसी धारणा दिया जाउछि। कठोपनिषद मतरे आत्मज्ञान संबंधरे जदि केही शुणे आश्चर्य बोध करे बुझिबाकू समर्थ हुए नहीं। दक्ष उपदेष्टा द्वारा यह जानी हेबा बळी उपदेष्टा बा वक्ता दुर्लभ। He who cannot even be heard of by many, whom many even hearing do not know, wondrous is he who can teach him, and skillful is he who finds him, and wondrous is he who knows even when instructed by the wise. Nachiketas is complimented by Jama as the seeker of the final bliss in rare among men. The talk is very different, for subtle is the nature of the self. The hidden depths of being are conceived as a great mystery. Not many have the earnest purpose, not many are able to find a proper teacher. Mantra 8. नौ नरेण वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेय बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यतक्य मणु प्रमाणात्। मंत्र 8 मीनिंग. ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବୁଝାଇଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିବେ। आत्मा सूक्ष्मठारु सूक्ष्म अटे ओ तर्क ठारु तर्क द्वारा लाभ हुए नहीं। Taught by an inferior man, he cannot be truly understood, as he is thought of in many ways, unless taught by one who knows him as himself. There is no going thither, for it is inconceivable, being subtler than the subtle. The Supreme Self, unknowable by agreement, as it is subtle beyond the reach of the senses, it can be immediately apprehended by intuition. Mantra 9. Mantra 9. नैसा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता नेव सुज्ञानाय पृष्ठ जान त्वमापः सत्य ध्रुतिर्वतासी त्वाद्रुंग नो भूयान्न चिकेत पृष्ठ। यही ज्ञान तर्क द्वारा प्राप्य नुहे, किंतु जो व्यक्ति पार्थक्य विभेद द्वंद्वर परपारी दैत्यर परपार अच्छा जदि से बुझाई दियंती ताहले तत्व सहजरे बुझी हुए। तुम्हें से स्तर जाए आसीपारिछ हे नचिकेता आम्भ मान तुम परि शिष्य और प्रश्नकर्ता सब मिलतु। मंत्र 9 कंटिन्यूड. Not by reasoning in this apprehension attainable, but dearest taught by another, in it will be understood. Thou hast obtained it,
Holding fast to truth, may we find Nachiketas, an inquirer like thee. Mere reason, okay, mere reason unassisted by faith cannot lead to illumination. We need a teacher. It is not only the pupil who is in search of a teacher, but the teacher who is also in search of a pupil. शिष्य जेपरि उपयुक्त गुरु खोजे, गुरु सेपरि उपयुक्त शिष्य खोजे. Mantra 10. The superiority of wisdom to wealth, earthly as well as heavenly. मंत्र 10. जानामह्यं सेवधिरित्य नित्यं नैह ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चित्तोऽग्नि रुनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यं. ଯମ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ କର୍ମଫଳ ଅନିତ୍ୟ, ଯାହା ନିତ୍ୟ ତାହା ଅନିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ନଚିକେତା ଅଗ୍ନି ହୋମ ଯଜ୍ଞାଦି ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ନିତ୍ୟକୁ ପାଉଅଛି. I know that wealth is impermanent. Not through the transient things is that abiding one reached, yet by me is said the Nachiketa's fire, and by impermanent means I have reached the everlasting. Mantra 11. Mantra 11. कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतो रनन्त्यमभयस्य पारं स्तोम महदूरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्यो धीरो नचिकेतस्य साक्षी. समस्त कामनार पूर्ति जगतर प्रतिष्ठा वा भित्ति यज्ञादि कर्मर अनंत सुखदायी प्रलयर श्रेष्ठ स्वरूप भयशून्य लोक प्रशंसनीय महत् नित्य सर्वोच्च आत्मार निवास स्थली एकमात्र लक्ष्य हे नचिकेता. तुम्हें संसार लोभनीय कर्मफल आकर्षण को परित्याग कर नित्य वस्तु प्रति निष्ठा प्रकाश कर. हैविंग सीन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिजायर, द सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, द सडन फ्रूट ऑफ राइट्स, द अदर शोर where there is no fear, the great nest of fame, the far stretching the foundation. O wise Nachiketas, thou hast steadfastly let them go. Mantra 12, Mantra 12. Apprehension of the Supreme through Adhyatma Yoga. Tang Duddasang Gudhamanu Pravishtang Guhahitang Gauharesang Puranam. अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति. आत्मा शाश्वत ओ पुरातन, से आम हृदयर गभीरतम प्रदेश में वास करती. अत्यंत प्रतिकूल विषम परिस्थिति मध्य शरीर रही देखा दुस्साध्य, से रहा स्थान को प्रवेश करने दुस्साध्य. से ही आत्मा को चिन्हि पारी विज्ञजन संसार शोक और दुख परित्याग करती. रियलाइजिंग थ्रू सेल्फ कंटेम्पलेशन दैट प्राइमल गॉड, difficult to be seen, deeply hidden, set in the cave of the heart, dwelling in the deep, the wise man leaves behind both joy and sorrow. Explanation of Mantra 12. Atma is hidden because we have to get behind the senses, the mind and understanding. When we get into the inner being of spirit, we are in immediate relation with the eternal. Adhyatma means pertaining to the self as distinct from Adhibhuta pertaining to the material elements and Adhidaiva pertaining to the deities. Adhyatma Yoga is yoking with one's essential self. It is the practice of meditation, a quiet, solitary, sustained effort to apprehend truth, which is different from the ordinary process of celebration.